Today date is 5/14. We are going to start the topic. Draw करो. सबने ड्रॉ कर लिया. लिखो. consider write down. Consider electric dipole having charge -q and +q placed at point A and B, placed at point A and B respectively, placed at point A and B respectively. So stop. Distance between the dipole is 2L. Distance between the dipole is 2L. Distance between the dipole is 2L. एक लाइन छोड़ के लिखो. We have to find we have to find
electric field. We have to find electric field at a point P. We have to find electric fields at point P on the point P on the axial line of point P on the axial line of electric dipole, axial line of electric dipole. बेटा जो हमने डायग्राम में बनाया ठीक है, ये यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है, जो भी उसका हमने लिखा क्लियर जैसे एक लाइन छोड़ के लिखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, distance of point P from the center of the dipole, distance of point P from the center of the dipole is x, from center of dipole is x. तो यानी कि पॉइंट P का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ये x जो सा डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डाइपोल पर अंडरलाइन कर लो, सेंटर ऑफ द डाइपोल पर अंडरलाइन कर लो, तो ये देख लो कि जो पॉइंट P का डिस्टेंस है O से, वो सेंटर ऑफ डाइपोल से है। अब जो ठीक है बेटा यहाँ नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल I will calculate the electric field due to this positive charge. So can I say that what is the direction of x point P due to positive charge? Arman, right direction, can I say that? बेटा क्या करते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी दैट इज E positive is in this direction, E due to positive Q charge. Yes or no? Sure. So can I write the value of E positive, electric field due to E positive charge? That is Q upon 1 minus. ध्यान से देखकर बताओ what is the distance between point P and positive charge Q? सोचो फिर बोलो, सोचो फिर बोलो। तो ये अगर टोटल 2L है तो कैन आई से दैट इसका सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा? L होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? x। इसमें से अगर मैं इस L को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? किसी को कोई डाउट? तो L minus x नहीं, x minus x। There is a difference between L minus x and x minus x। तो आपके पास आएगा दैट इज x minus L का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन हमने वहां पर लिख दिया कि अगर आप लिखना चाहते हो कैन आई से दैट इट इज अ राइट डायरेक्शन, इट इज इन राइट डायरेक्शन। Similarly, what is the electric field due to this negative charge at point P? Can I say that it is towards the negative charge? Correct? It is towards the negative charge at point P due to this negative charge. है ना? So it is over here. It is E negative. E negative. और E नेगेटिव के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वेक्टर क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू K Q अपॉन x प्लस L का होल स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। अब मुझे एक चीज सोचकर बताओ कि E पॉजिटिव ज्यादा है या E नेगेटिव ज्यादा होगा? E पॉजिटिव ज्यादा होगा। E पॉजिटिव ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, बट नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या है पॉइंट से ज्यादा है। ये x प्लस है, ये x माइनस है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, तो E पॉजिटिव इज ग्रेटर देन, तो आई कैन श्योरली से दैट E पॉजिटिव इज ग्रेटर देन
दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो कैन आई से दैट सर जो सा ई नेट होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। यस और नो? समझते हो? अब यहां पर मैं ई पॉजिटिव का वैल्यू पुट कर देता हूं, ई नेट निकालने के लिए। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं दैट इज ई क्यू अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ए क्यू अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां पर अगर मैं कॉमन निकालूं दैट इज k क्यू कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? अच्छा ये देखो ये किस चीज का फॉर्मूला बनेगा तो मेरे को बता सकता है? a माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर a प्लस b माइनस a प्लस कैन आई से x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बताओ ये सो भाई आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है? मल्टीप्लाई करो, क्या करो? मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ऐसे मल्टीप्लाई करोगे देखो x माइनस एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसे ही एलसीएम आएगा, यही एलसीएम आएगा। इसको आप खोल सकते हो, इसको खोल लो, मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके तुम्हारे पास ये रिजल्ट है। x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर हम इस चीज को ओपन आउट करेंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोलने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? अगर आप यहां पर देखोगे दैट इज k क्यू, इसका फॉर्मूला क्या है? This is x square plus l square plus 2xl। अच्छा ये x square माइनस के साथ आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस x square माइनस l square प्लस 2xl। ये वाला उसमें समझ में आया? बेसिकली इसका फॉर्मूला मिलेगा x square plus l square minus 2xl। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट के बाद माइनस है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से हम देखेंगे कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस चीज को सॉल्व करके ये इसके पूरा आएगा दैट इज k क्यू इनटू 4xl अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट? x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे सभी को क्लियर है? पक्का 100%? ओके। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपके पास P का मैग्नीट्यूड इसके करो। P इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है? दैट इज Q into 2 Q is डाइपोल मोमेंट। At P डाइपोल मोमेंट इज ड्यू टू दिस डाइपोल। इस डाइपोल को अपन इस तरीके से P देना रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दिस P is equal to either charge into 2। डाइपोल मोमेंट इस पॉइंट से निकल तो डाइपोल ना हो। ठीक है बेटा? राइट? Now if P is equal to Q into 2L, so can I say that is P net is equal to यहाँ पर ये 2Q into L, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? P और एक 2 आ जाएगा 2K P into
एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक बताओ सभी को क्लियर है? 2kp into x, right? ऐसे मैंने स्क्वायर का तो अगर बेटा यहाँ पर अगर मैं k की वैल्यू को खोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू को खोलता हूँ तो k की वैल्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ? v net is equals to 2 k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/4 pi epsilon naught p into x upon x square minus l square का whole square. So this is the formula of electric field into a dipole on axial. ठीक है, got it? Now we are doing a special case. Special case here due to short dipole. बाद में लिखते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। अब बेसिकली हम शॉर्ट डाइपोल कब बोलते हैं? when x is much greater than 2l, that is distance between the charges. यानी कि अगर लेट्स से अच्छा ज़्यादा डिस्टेंस का बोलते हैं, लेट्स से इनके बीच में का डिस्टेंस है माइक्रोमीटर्स और लेट्स से सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस है 5 मीटर्स, तो माइक्रोमीटर के सामने 5 मीटर क्या है? बहुत ज़्यादा। तो अगर हमारे पास ये डाइपोल के बीच में डिस्टेंस कम है as compared to the center of dipole to the point on the axis, then we will ask it as short dipole. अगर ये short dipole होगा, अगर ये short dipole होगा when x is much greater than l, ठीक है, तो can I say that l square को हम neglect कर सकते हैं? देखो l बहुत छोटा है, l बहुत छोटा और छोटे टर्म का स्क्वायर छोटा होगा या ज्यादा होगा? देखो अगर ये कंसेप्ट याद रखना, अगर लेट्स से आपके पास नंबर इज ग्रेटर देन 1, लेट्स से 4 है, अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो ये क्या बन गया? 16, ये बढ़ गया। यही अगर आपके पास 0.5 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 0.25 तो मेरे को बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा? 0.5 बड़ा, 0.5। तो 1 से छोटे नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो और कम हो जाता है। तो if this is the case, then we can neglect L square। अच्छा अगर हम L square को निगलेक्ट करते हैं, L square को निगलेक्ट किया तो ये x का स्क्वायर है, तो ये उसका फर्दर स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? x का पावर 4 बन जाएगा। अच्छा x का पावर 4 है, ऊपर एक x पड़ा है, उसके साथ कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? x3। तो can I say that E net is equal to 2 pi epsilon naught into p to kp upon x, या इसको अगर मैं और शॉर्ट में करते हैं 2kp upon x, एक बार ध्यान रखना है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, दिस इज ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। टू kp upon r3 getting copy of x, हाँ अभी हम नहीं काटेंगे ना, उसका k का वैल्यू वैसे का वैसे देखो हम इसको नहीं, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते, उसका एक रीजन है। ये नहीं कि हमारे काटना नहीं आता, इसका रीजन क्या है कि अगर मैं इस तरह छेड़छाड़ कर दूंगा तो इसका वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका वैल्यू मेरे को डायरेक्टली लर्न है, दैट इज 4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू डायरेक्टली लर्न है, दैट इज 900 दैट्स इट। पास में यहाँ तक इस चीज को सारी को नोट डाउन क्लियर, और इसका डेरिवेशन बोर्ड पॉइंट्स को भी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चंस।
यहाँ पर 2 को डिवाइड करके 2 into 2 लिख सकते हो। एक 2 उठा लिया, एक 2 उठा लिया, एक L उठा लिया, इसको E लिख सकते यहाँ तक क्लियर। अच्छा बेटा जोड़ो, कैसे समझना है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर पता जा रहे हैं। Over here, what is the direction of dipole movement? Negative to positive. Can I say that the direction of dipole movement is in this direction? Sir, यहाँ से किस तरह से dipole movement का direction? P का direction ये है। अच्छा मुझे बताओ E नेट का डायरेक्शन, E नेट का भी डायरेक्शन कौन सा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर? इस तरफ है। दिस इज द डायरेक्शन। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर चलो सर यहाँ से E नेट का डायरेक्शन ये आया, अगर सर पॉइंट कुछ यहाँ पे होता, P पॉइंट यहाँ पर होता तो मेरे को बताओ E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में आता? इस डायरेक्शन में आता। और E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में आता? इट इज इन दिस डायरेक्शन। और यहाँ पर कौन सा ज्यादा होना था? E ड्यू टू नेगेटिव इज ग्रेटर देन E ड्यू टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी आपका E नेट कौन सी डायरेक्शन में आता? इस डायरेक्शन में आता। अगर आप सेंटर पर भी होते तो भी पॉजिटिव के कारण इधर ये तो चलो कैंसिल हो रहा है। तो बेसिकली एक्सियल लाइन के ऊपर, एक्सियल लाइन मतलब उसके राइट पर और उसके लेफ्ट पर E नेट आपके पास कौन सी डायरेक्शन में आता है? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो एक नोट बनाओ, लिखो
बोला लिखो एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, angle between the electric dipole moment P and the electric field intensity E. Angle between the electric dipole moment P and electric field intensity E. And electric field intensity E. Due to electric dipole, at a point on its axial line, is due. Point on its axial line is due. That is electric field is along the direction of dipole moment. It's along the direction of dipole moment. Question लिखो. Calculate the electric field at a distance. Calculate the electric field at a distance 1 meter from the center of electric dipole. 1 meter from the center of electric dipole on its axial line. Full stop. The electric dipole consists of two opposite charges of magnitude 2 into 10 raised to power minus 14 coulomb. 2 into 10 raised to power minus 14 coulomb. Separated by a distance of 2 into 10 raised to power minus 4 meter. 2 into 10 raised to power minus 4 meter. Correct. Solve करो. सबसे पहले चेक करो कि ये वाला होना लगेगा या ये वाला होना लगेगा.
बेटा आपको x का वैल्यू कितना गिवन है? x का वैल्यू कितना गिवन है? 1 मीटर, 1 मीटर गिवन है। और डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल कितना है? 2 into 10 raised to power -4। डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल इज 2 into 10 raised to power -4 और उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ से और पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर डिस्टेंस। हाँ, तो ये बहुत कम है एस्टिमेट ऑफ x, तो ये हमारे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप p का वैल्यू निकाल सकते हो, k का वैल्यू निकाल सकते हो, x का वैल्यू आपको गिवन है, तो पुट करो और आंसर जटिल करो बेटा, जल्दी आंसर निकालो। आंसर इज 7.2 into 10 raised to power -8। About 44 into 10 raised to power -8. 144 into 10 raised to power -8. देखो बेटा, सबसे पहले p का वैल्यू कितना होगा? 10 to the -4। कितना? चेक करते हैं, एक मिनट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और it is the electric dipole consists of two opposite point charges of magnitude this। यानी कि p का वैल्यू अगर निकालना है, it is 2 into 10 raised to power -14 separated by a distance of 2 into 10 raised to power -4। अब आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको डिस्टेंस बिटवीन द वो दिया हुआ है, तो आपको का डाइपोल है 2 into 10 raised to power -2। दिस इज द डाइपोल मोमेंट p। तो आपको f का e नेट किसके इक्वल है? दैट इज 2 into k का वैल्यू 9 into 10 raised to power 9 to k into p का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारे पास? दैट इज 2 into 10 raised to power -14 मल्टीप्लाई 2 into 10 raised to power -4 डिवाइडेड बाय 1 क्यूब। तो कर लो सॉल्व इसको, तो ये 10 raised to power -4 है, ये -14 है, तो टोटल 10 raised to power -18 हो गया। 18 plus 9 -9, ये इसको सॉल्व करके 10 raised to power -9 आ गया, राइट। और अब इस चीज को सॉल्व कर दो, 2 to the 4 9 to the 18 into 4 72। हाँ, और अगर पॉइंट आपको यहाँ पर लेकर आना है तो डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो दैट इज 7.2 into 10 raised to power -6। 7.2 into 10 raised to power -6। मैं 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर तो दिया? ये 2 पड़ा, ये 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या 2 को मल्टीप्लाई करना? थोड़ा दिमाग को खोलो। और भाई 2 क्यों L है? मैं बार-बार यही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आपको अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है, भाई सोलर 2 से यहाँ पर अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है तो डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस यहाँ पर कितना? 2L है, तो मैंने यहाँ पर 2L लिखा। यहाँ पर चार्ज कितने हैं? ये चार्ज है, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज कितने हैं? ये चार्ज डिस्टेंस है, तो केवल 2L कर दिया बस दैट्स इट। ऐसे मतलब कल को यहाँ पर केवल 8L बोल दूंगा, ये डिस्टेंस 8L है, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? केवल 8L हो जाएगा। ये डेफिनेशन याद करो, मैं फिर से बार-बार बोल रहा हूँ, डेफिनेशन को याद करो, दैट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सुनो, टीचर की बात सुनो।
अकेले पढ़ने पर जाओगे नई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, उसको डेफिनेशन को घर जाके पढ़ो। चलो यहां तक समझ में आया सभी को? पक्का? राइट। Now I will do the next derivation, that is electric field on the बेटा सभी को समझ में आया? On between two real line or rod side on position due to electric dipole. Due to electric dipole. डायग्राम बनाने चाहिए। राइट डाउन। कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर an electric dipole of charge minus q and plus q, minus q and plus q, separated by a distance 2l, separated by a distance 2l, separated by a distance 2l, separated by a distance 2l. We have to find next equal point P is on the equatorial line. Point P is on the equatorial line of dipole. Equatorial line of dipole. Now